से मेरी आवाज आ रही है क्या पीछे तक? एक बात. So we were discussing about the descending motor pathways. Okay, and we have seen that there are two different groups in which the descending pathways are arranged. One group of the pathways are those which supplies the extremity or the limb musculature, while the other type of the descending fibers are those which supplies the axial and the girdle musculature. तो दो अलग अलग तरह के पाथवे जो फाइन डिस्क्रीट मूवमेंट्स को कंट्रोल करने वाले पाथवे अलग ढंग से चलते हैं और जो पोस्चर को कंट्रोल करते हैं वो अलग चलते हैं साथ में. तो वन इज द लेटरल डिसेंडिंग पाथवे, अनदर इज द मीडियल डिसेंडिंग पाथवे. देयर आर टू or rather three tracts which arises from the cerebral cortex and form the part of the lateral descending system. One is corticospinal. cerebral cortex से spinal cord के lowest level तक जो जाता है वो corticospinal pathway कहलाता है. That is the major pathway in the lateral descending system. The second pathway arises from the red nucleus in the upper part of the brainstem, and that forms the what is known as the rubrospinal tract. This rubrospinal tract actually is a continuation of the cortico-rubrospinal pathway. फाइबर कॉर्टेक्स से अराइज हो रहे हैं, रेड न्यूक्लियस में जा रहे हैं और वहां से फिर पाथवे निकल के आ रहा है. द थर्ड पाथवे or third type of fibers which constitutes or comes into this lateral pathway is the corticobulbar fibers. Corticospinal, rubrospinal and corticobulbar fibers. Corticobulbar fibers are those which arises from the cerebral cortex and ends over the cranial nerve nuclei supplying the muscles of the face. Okay. So three descending pathways are there which forms in the lateral group. The lateral group of the tracts, as you can see here, this is lateral corticospinal pathway and this is the rubrospinal pathway, and they are communicating or synapsing with the lateral group of the neurons in the spinal cord anterior gray matter. Most of these neurons of the corticospinal pathway synapses with interneurons rather than the motor neurons. ये motor neurons से directly synapse नहीं करते, ज़्यादातर they communicate or synapse with the interneurons in this particular area, and then these interneurons are communicating with the alpha and gamma motor neurons which are supplying the limb musculature of the body. Okay, same is about the rubrospinal pathway. Now on this side in this diagram are shown the tracts which belong to the medial descending pathway, which are mainly concerned with the regulation of tone, posture and equilibrium of the body. These pathways run on the anterior side of the spinal cord and ends around the medial group of the interneurons. ये lateral group था, ये medial group of the interneurons are there. These pathways we just discussed about are vestibulospinal pathway, reticulospinal pathway, tactospinal pathway and olivospinal pathways. चार major pathways है, थोड़े बहुत और उनकी हम बात करेंगे आगे. So these are the medial group of the descending pathways arising from different areas and are controlling the tone, posture and equilibrium mainly. Come on. So it means these pathways are mainly innervating the axial and the girdle musculature. Okay, while the lateral descending pathways are mainly supplying the neurons which are controlling the distal musculature of the body, mainly limb musculature. So one of the major descending pathway, ये एनाटॉमिकली आपको एनाटॉमी में ज्यादा पढ़ाएंगे, मैं फंक्शनल एस्पेक्ट ज्यादा डिस्कस करूंगा इसका. आर द corticospinal, as I have said, corticorubral, corticobulbar and the rubrospinal pathways. Corticospinal tract, as the name suggests,
runs throughout the length of the brain stem as well as the spinal cord. ऊपर से लेके नीचे तक चलता है ये. There are 4 areas from which the fibers are arising. The major portion or major fibers are contributed by the primary motor cortex. ब्रॉड में जो सेंट्रल सर्कस है सुपीरियर लेटरल सरफेस के ऊपर, जिसके पीछे की हम बात कर चुके हैं प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स था, उस सर्कस के बिल्कुल आगे बिल्कुल सामने जो है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है. दैट इज एरिया 4 इन दी ब्रॉडमैन्स क्लासिफिकेशन और ब्रॉडमैन्स नोमेनक्लेचर. So fibers for the corticospinal tract arises from the primary motor cortex area 4, premotor area 6 वो उसके सामने है, supplementary motor area वो उसके भी सामने है, area 8 is there, and somatosensory cortex. Mind it, somatosensory cortex is also contributing to the descending fibers or the corticospinal pathway. Sensory cortex से भी descending fiber आ रहे हैं. So there are 4 sites from where the corticospinal pathway arises. Now these fibers, as you can see in the diagram we have shown, is the primary motor cortex, premotor cortex, supplementary motor area. On the medial side, the fibers are also, areas are also there. This is the medial surface showing the area 4 and 6 from where the fibers are arising. Some fibers which are actually controlling the digit muscles, which are finer muscles requiring the fine manipulative activity of the body, are arising from the large pyramidal cells in the area 4. They are the largest cell in the cerebral cortex. Largest cell CNS के अंदर cerebellum में होते हैं, जिनको हम परकंजी सेल कहते हैं. उससे छोटे जो है जाइंट पिरामिडल सेल्स है, ये आपके एरिया 4 के अंदर मिलेंगे. They are contributing only 3% of the fibers to the corticospinal tract, and they are mainly controlling the activity of the digital muscles, small muscles required for the fine manipulative activity. Otherwise, rest of the fibers are arising from area or layer 5th of the cerebral cortex. Motor cortex की layer 5th, ऊपर से गिनेंगे तो 5वीं layer आएगी. These fibers from different areas, they converge into the internal capsule, and they appear like the radiating fibers. So they have been given the name of the corona radiata. This corona radiata passes through the internal capsule where the fibers are compressed basically. ये internal capsule बहुत छोटा सा structure है जिसमें sensory fibers ऊपर जा रहे हैं, motor fibers नीचे आ रहे हैं, ठीक है. So they are compressed in the internal capsule. Then these fibers, when descend downward to the brainstem, they reach to the pons. In the pons, large amount of the gray matter is there, and when these fibers are coursing through the pons, they break up the pontine gray matter into what are known as the pontine nuclei. So fibers of the corticospinal tract are broken down, and in the pons they constitute, or rather they contribute to the formation of the pontine nuclei. Then the fibers descend down, comes to the level of the medulla oblongata, and just before the start of the spinal cord, most of the fibers of these corticospinal paths cross to the opposite side. Fibers cross कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. Okay. So 80% of the fibers of the corticospinal tract cross to the opposite side and descend into the spinal cord in the lateral white column as the lateral corticospinal tract. So this is a crossed pathway, unilateral pathway. 20% of the fiber do not cross. They descend downward into the spinal cord as anterior corticospinal pathway, which is uncrossed pathway. Okay. So corticospinal pathway or the fibers are then broken down into 2 major pathways. 80% fibers have crossed at the level of the lower level of the medulla, that is known as medullary pyramids, जो उसी की वजह से बन रहे हैं, वहां पे क्रॉस करके अपोजिट साइड में आ गए, descending down as lateral corticospinal tract, while 20% fibers descend downward without crossing and into the spinal cord they descend as anterior corticospinal pathway. The difference is that the lateral corticospinal pathway supplies the anterior horn cells, that is alpha and gamma motor neurons of the same side of the body, while those fibers which are uncrossed descending as anterior corticospinal pathway while relaying
on the interneurons, and then these interneurons innervate neurons of the both sides of the spinal cord. So right side में भी जाएगा और left में भी जाएगा. So there is a bilateral innervation of the anterior corticospinal pathway fiber, while there is unilateral innervation of the lateral corticospinal pathway. ये आपका डायग्राम है कोरोना रेडिएटा. Most of the fibers are crossed on this side, lateral corticospinal pathway, and this is the anterior corticospinal pathway. Similarly, corticobulbar fibers जो आ रहे हैं, जो आपके facial muscles को supply करेंगे, hypoglossal and the facial muscles are there. They have crossed again. They have crossed to the opposite side, and they are supplying on the other fibers and bilaterally. तो फेशियल मसल्स में भी दो तरह की चीजें होगी, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्लिनिकली काम आता है. फेशियल मसल्स आर सप्लाइड यूनिलेटरली, बट द मसल्स ऑफ द आईलिड, जो हम पल के झपकाते हैं, एंड द ऑर्बिकुलरिस, सॉरी, दिस इज व्हाट इज नोन एज, व्हाट इज दिस नोन एज, ऑर्बिटोफ्रंटालिस मसल्स, दे आर सप्लाइड बाइलेटरली. इनमें बाइलेटरल सप्लाई आती है, यहाँ पे बाइलेटरल सप्लाई आती है, बाकी फेशियल मसल्स में यूनिलेटरल सप्लाई आती है. तो अगर मान लीजिए ब्रेन स्टेम में लीजन हुआ है किसी ब्लीडिंग की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, तो ये जो फीचर्स आएंगे फंक्शनल लॉस के, उसका हमको ध्यान रखना पड़ता है कि लीजन एग्जैक्टली कहाँ हुआ होगा. नाउ दीज कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइंडिंग द डेवलपमेंट. एट द बर्थ these fibers are non-myelinated. It means they are not functioning properly. The myelination in these fibers is associated with the phenomena of or learning of the walking process. आप बच्चा जब पैदा होता है, साल सवा साल का होता है, तब तक वो चल नहीं पाता, ठीक है ना. आप खड़ा करोगे तो गिर जाता है वो. इसका मतलब जो आपका वॉलंटरी एक्टिविटी था वो अभी शुरू नहीं हुआ, ऊपर का कंट्रोल शुरू नहीं हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड का कंट्रोल ही चल रहा है. स्पाइनल कॉर्ड फेवर्स द एंटी ग्रेविटी मसल्स इन द बॉडी. स्पाइनल कॉर्ड की जो मेजर एक्टिविटी है वो क्या है, एंटी ग्रेविटी मसल्स को एक्साइट करना. टिबियालिस एंटीरियर इज एन एंटी ग्रेविटी मसल. ओके, सो व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट्स लर्निंग टू वॉक, आपने देखा होगा अगर ऑब्जर्व किया हो तो, कि जब बच्चा जब पहले घुटने चलता है, उसके बाद में जब खड़ा होना शुरू होता है तो उसका पैर जो है यूं मुड़ जाता है और वो गिर जाता है. सीख रहा है लर्न करना. इसका मतलब ये पैर ऊपर आ जाता है, तो वे अभी स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन चल रहा है, कॉर्टेक्स का फंक्शन शुरू नहीं हुआ. धीरे धीरे कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे माइलिनेट होना शुरू होता है और वो स्पाइनल कॉर्ड की एक्टिविटी को सप्रेस करना शुरू करता है. देन दिस activity, that is spinal cord causing extensor activity, is gradually suppressed, and then when the child puts the sole on the ground, then there is a firm grip on the ground created by the plantar flexion of the great toe and adduction of the small toes. That gives a grip. Child stands up and then starts walking also. So up to 2 years, the corticospinal pathway gets completely myelinated and the walking becomes flawless. So in the cerebral cortex, again there is a topographical arrangement of the fibers, as you will see in the diagram. On one side it is the motor representation, on this another side it is the sensory representation. ये sensory cortex में representation है और ये motor cortex में representation है. What is to be seen in this diagram, which is very evident, is that a very large number of the neurons of the motor cortex are engaged in the production of the face or in the activity of the facial muscles involved in the production of the speech or the language. स्पीच से रिलेटेड फिनोमिना से जितनी भी मसल्स काम आ रही हैं, फेस की काम आ रही हैं, लैरिंक्स की काम आ रही है, टंग की काम आ रही है, उनके लिए सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स की सरफेस के ऊपर. बाकी जो मसल्स पोस्चर मेंटेनेंस में काम आ रही हैं, ये वाली उनके लिए बहुत छोटा सा एरिया इस कॉर्टेक्स के अंदर. इट मींस मोर डिस्क्रीट फाइनर मूवमेंट्स रिक्वायर्ड मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कॉर्टिकल न्यूरॉन्स, एंड दैट इज शोन इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द cortical surface in the primary motor area. Same is true for the sensory representation also.
So those areas which are involved in greater acuity of the sensory innervation are represented or are occupying greater areas on the cortical surface. This is the, ये क्या pathway है? What is this pathway? Corticospinal pathway, of course, isn't? Pyramids are there. ये corona radiata fibers have crossed to the opposite side, lateral corticospinal pathway and anterior corticospinal pathway. Interneurons are there, supplying on the same side, supplied on the other side also. Bilateral innervation is there, and on this side only unilateral innervation is there. The second one is the rubrospinal pathway arising from the red nucleus. Red nucleus has got two components. Different types of cells are there. One is known as the magnacellular portion. Another is known as the parvocellular portion. Magnacellular portion contains large size cells, इसलिए मैग्ना कहते हैं उसे. पार्वोसेल्युलर छोटे सेल होते हैं, इसलिए पार्वोसेल्युलर कहलाता है. So fibers belonging to the rubrospinal pathway arises from the magnacellular portion of the red nucleus, forms what is known as the rubrospinal pathway, cross to the opposite side and form the lateral descending pathway system and reaches to the spinal cord, and they also terminate like that of the corticospinal pathway. They are also responsible for discrete movements of the body parts. Yeah, this is rubrospinal pathway, red nucleus crossing to the opposite side and relaying into the spinal cord. Then the other pathways which belong to the medial descending system are different, and as I have said, their main function is to control tone, posture and equilibrium of the body, whether the person is sitting or walking or moving or running, whatever it is, they have to be maintained. So one of them is the lateral vestibulospinal pathway. This is the pathway present throughout the extent of the spinal cord. ऊपर से नीचे तक पूरे में मौजूद है ये. Arising from the lateral vestibular nucleus. Vestibular nucleus के बारे में और पढ़ेंगे हम, चार होते हैं ये. So they are arising from the lateral vestibular nucleus. Medial होता है, inferior होता है, lateral होता है, superior होता है. These fibers are running ipsilaterally. It means they are not crossing. So this pathway is a ipsilateral pathway, uncrossed pathway running on the same side of the spinal cord, present throughout the length and ends on the interneurons of the medial group of the motor neurons in the spinal cord. Lateral में आ गया, अब medial वाले motor neurons and interneurons आ रहे हैं. This pathway is excitatory. This pathway is always excitatory to motor neurons of the proximal postural muscles of the body. तो इनको कंट्रोल करने के लिए इनपुट कहां से आएगा? तो दिस न्यूक्लियस, लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, to have its effect upon the posture regulation, to maintain the equilibrium, it receives input from the semicircular canals and the otolith organs, which are part of the labyrinth और इंटरनल ईयर जिसको कहते हैं ना, वेस्टिबुलर एपरेटस का पार्ट है ये सेंसरी एपिथेलिया है. यहाँ से जो इनपुट जा रहा है वो आपके लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में जा रहा है और वहां से फिर डिसेंड हो रहा है, ट्रैक्ट आ रहा है. सो दिस ट्रैक्ट व्हाट एग्जैक्टली डज, एडजस्ट पोस्चर ड्यूरिंग लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. आप भागना शुरू किया, भागते भागते रुक गए, एक्सेलरेशन हुआ, डिसेलरेशन हुआ, ये पाथवे एग्जीक्यूट करता है. ठीक है, एंगुलर रोटेशन हुआ, घूमना शुरू हुआ, तो ये पाथवे एक्टिविटी में आता है. सो ड्यूरिंग लीनियर एंड angular acceleration, this pathway maintains the posture and equilibrium of the body by causing appropriate changes in the tone of the different muscles. Second one is the medial vestibulospinal pathway. This is also excitatory to the alpha motor neurons. It is present, it arises from medial vestibular nucleus, of course, present in the cervical and mid thoracic region only. ये पाथवे सर ऊपर होता है स्पाइनल कॉर्ड में, नीचे तक जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये एक्शन इसका अलग आ रहा है. So end on the medial group of the interneurons and get input mainly from semicircular canals
of the vestibular apparatus. Semicircular canals are stimulated only during the angular acceleration. लीनियर एक्सेलरेशन में ये स्टिमुलेट नहीं होती, सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन से स्टिमुलेट होती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर एबल टू एडजस्ट द हेड पोजीशन इन रेस्पॉन्स टू द रोटेशन. जब हम घूमना शुरू करते हैं तो बॉडी अलग से घूमती है, सर अलग से घूमता है, तो सर को बॉडी के साथ में घुमाने की जो जिम्मेदारी है वो इस ट्रैक्ट की है, बेसिकली मीडियल वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट. एंड दे आर ऑलवेज एक्साइटेटरी टू द स्पाइनल मोटर न्यूरॉन. तो दोनों वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट, वेदर इट इज लेटरल और मीडियल, are excitatory tract. They are ipsilateral tracts and excite the alpha motor neuron and gamma motor neuron to some extent of the spinal cord. That is the diagram showing these tracts. The second one are the reticulospinal tracts. The reticulospinal tract arises from two areas. One is the pontine reticular formation, another is the medullary reticular formation. दोनों जगह रेटिकुलर न्यूक्लियाई मौजूद है. द पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई गिव्स ओरिजिन टू द पोंटाइन एक्साइटेटरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, पूरा नाम है इसका. अराइजेस फ्रॉम न्यूक्लियस रेटिकुलरिस पोंटिस. ओरलिस और कॉर्डालिस का मतलब है कि ये जो न्यूक्लियस है इसका ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, ओरलिस ऊपर का, कॉर्डालिस नीचे का, दे गिव्स ओरिजिन टू द रेटिकुलोस्पाइनल पाथवे. पाथवे इज स्टिलेटरल, अनक्रॉस्ड पाथवे है ये. Ends on the medial group of the interneurons as the other one, and excites motor neurons or the proximal extensor muscles for the posture maintenance. इन muscles को ये excite करता है. The medullary reticulospinal tract arises from medullary reticular formation, descend downward, bilaterally descend करता है, ये फर्क आ गया. It descends bilaterally and it is basically inhibitory to the gamma motor neurons of the spinal cord. ये ध्यान देने की बात. The third one is the tactospinal tract arising from the superior colliculus in the midbrain. It is a cross tract and it is present only in the cervical region. सर्वाइकल रीजन के नीचे स्पाइनल कॉर्ड में ये ट्रैक्ट नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ ऊपर ही ऊपर होता है. बिकॉज इट कंट्रोल्स हेड मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू दी विजुअल, ऑडिटरी एंड सोमैटिक स्टिमुलाई. मैं यहां खड़ा हूं, इधर से टक की आवाज आई, सर घूम गया, ये जो मूवमेंट है ऑटोमेटिकली दैट इज बीइंग कॉल्ड बाय द टैक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट. ऑडिटरी स्टिमुलस हो सकता है, थोड़ा सा बिजली का या कोई क्लिक आया लाइट का तो सर घूम जाएगा इमीडिएटली. तो जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स आ रहे हैं बॉडी के ऊपर की पार्ट के हेड के, वो इससे कंट्रोल हो रहे हैं. सो कंट्रोल हेड मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू विजुअल, ऑडिटरी एंड सोमैटिक स्टिमुलाई. द फोर्थ वन इज द ओलिवोस्पाइनल पाथवे arising from the inferior olivary nucleus, that is I think largest nucleus in the medulla oblongata, सबसे बड़ा न्यूक्लियस है ये. Fibers run downward ipsilaterally and surround the medial group of the interneurons. Main function is posture regulation. Okay. Besides these four major pathways, there are other descending pathways which we call as the monoaminergic pathways. Okay. So one is the norepinephric or norepinergic pathway arising from two small nuclei, locus ceruleus and locus subceruleus. And this pathway is inhibitory, terminate on the motor neurons and the interneurons. अलग से आता है ये. Then this another major pathway is the serotonergic pathway we have seen. The nucleus in the medulla oblongata which we have seen, nucleus raphe magnus, जो बीच में मौजूद है, they gives origin to the serotonergic pathway which supplies serotonin to most parts of the brain as well as to the spinal cord. And this pathway modulates the pain sensation we have seen in the substantia geluginosa, and it is basically an inhibitory pathway in the spinal cord. These were the descending pathways.
So if these pathways are damaged, then what are the clinical features of such a damage? Corticospinal tract lesion is the most common lesion in the elderly persons because of hypertension. Hypertension may cause the blood vessels become brittle, and when the pressure rises suddenly, there is a bleeding. And the most common site of bleeding in the brain is the internal capsule, where the fibers are compressed. And the most common damage is to the corticospinal pathway. So corticospinal pathway damage occurs mostly in the internal capsule. एक्सीडेंट्स में यहाँ पे मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जा रही है, यहाँ पे किसी ने मार दिया, डंडा मार दिया, तो ब्लीडिंग हो सकती है और उसकी वजह से भी लीजन आ सकते हैं. ठीक है. So lesions of the corticospinal tract have been named in a different ways. अलग अलग नाम दिए हैं इसको. It is known as either pyramidal tract syndrome भी कह सकते हैं इसको, अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज भी कह सकते हैं इसको, जो हम ज्यादातर कहते हैं इसे, corticospinal sign भी कहते हैं हम इसे. So all the three nomenclatures are used for the damage of the corticospinal pathway, mostly occurring in the internal capsule because the fibers are compressed there. The features of this damage in the patient, most common is hypertonia. मसल्स का टोन बढ़ गया, पहली बात, आगे इसकी डिटेल आएगी. इंक्रीज टोन इन द स्केलेटल मसल, दैट इज नोन एज हाइपरटोनिया. इंक्रीज्ड फेजिक एंड टोनिक रिफ्लेक्सेस, डिटेल में बात करेंगे. इसका मतलब रिफ्लेक्सेस का जो रेस्पॉन्स है वो खत्म नहीं होता, बढ़ जाता है. एक्सैजरेटेड डीप रिफ्लेक्सेस आर देयर, सेकंड फीचर. थर्ड फीचर, लॉस ऑफ वॉलेंटरी मोटर एक्टिविटी, because voluntary motor activity arises from the primary motor cortex, okay, or supplementary motor cortex, and when these fibers are destroyed, they cannot initiate activity in the alpha motor neurons of the spinal cord, and so no voluntary activity is possible. So loss of all voluntary activity will be there depending upon the number of the fibers damaged. ऐसा नहीं कि सारे फाइबर डैमेज एक साथ ही हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता. कम फाइबर होंगे तो कम मसल्स पैरालाइज होंगी. वीकनेस ऑफ द डिस्टल मस्कुलेचर, ये फर्क आ गया थोड़ा. ये मसल पैरालाइज नहीं हुई है पूरी, ये थोड़ी वीकनेस हुई है इनके अंदर, बाकी मसल्स पैरालाइज हो जाती है एक साइड की. हेमीप्लीजिया इज देयर. डिक्रीज सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, अब ये रिफ्लेक्सेस सुपरफिशियल है, डीप है, अभी हमने बात ही नहीं करी है, नहीं करी ना. सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस क्या होती हैं, डीप रिफ्लेक्सेस क्या होती हैं, इसकी आगे बात करेंगे. So deep reflexes are increased in the activity. Superficial reflexes are lost in upper motor neuron disease or damage to the corticospinal pathway. And abnormal plantar response is there. अब ये सारी reflexes की बातें, इनकी डिटेल आएगी बाद में. But if the fibers at the medullary pyramid are damaged, then thing becomes different. थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है. एक तो इंटरनल कैप्सूल में लीजन हुआ तो जो फीचर्स आए वो हमने देखे इस तरह के आएंगे. अभी भी कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे ही डैमेज हो रहा है, मगर वो मेडुलरी पिरामिड पे डैमेज हो रहा है. दैट इज अ वेरी कॉमन साइट. अगर आपका CSF का प्रेशर घट जाए तो मेडुला हर्निएट हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वो एरिया दब जाता है और फाइबर्स उसके डैमेज हो सकते हैं. सेरिबेलर ट्यूमर्स है, कोई मेडुला को नीचे प्रेस कर सकता है, उसकी वजह से मेडुलरी पिरामिड का लॉस हो सकता है. मेडुलरी ट्यूमर्स हो सकते हैं खुद के भी. So there are various causes which can cause damage to the pyramidal fibers only in the medulla oblongata. That will result into weakness of the distal musculature only, not complete paralysis. But abnormal plantar reflex will always be there. Muscle tone will be decreased rather than increased. Muscle tone घटेगा, बढ़ेगा नहीं. No spasticity is there, and other features of the upper motor neuron are absent. So there is a wide difference between the damage to the corticospinal pathway in the internal capsule and damage to the pyramidal tract at the level of the medulla oblongata. ये आपका corticospinal pathway के लीजन्स के बारे में था. अगर मीडियल सिस्टम पाथवेज, वेस्टिबुलोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल डैमेज होते हैं तो क्या होगा?
रिड्यूस्ड टोन इन द पॉस्चरल मसल्स, पॉस्चरल मसल्स में टोन घट जाएगा, राइटिंग रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाएंगी, एब्सेंट हो जाएंगी, राइटिंग रिफ्लेक्स में करेक्शन ऑफ द पॉस्चर व्हेन द पॉस्चर इज डिस्टर्ब, लोकोमोटर इंपेयरमेंट चलने में दिक्कत आएगी, लोकोमोटर इंपेयरमेंट विल बी देयर, and manual manipulation of the object may be normal because the lateral system pathway is functioning properly. So fine manipulative activities are possible in the damage to the medial descending pathway. So there are certain nomenclature which are to be remembered. Paraplegia, both lower limbs are paralyzed. दोनों अगर ये स्पाइनल कॉर्ड लीजन में होता है, कॉर्टेक्स लीजन में नहीं होता. बोथ लिम्स पैरालाइज, पैराप्लीजिया. क्वाड्रिप्लीजिया, ओनली ऑल 4 लिम्स आर गेटिंग पैरालाइज्ड. मोनोप्लीजिया, एक लिम्ब पैरालाइज हो गया, और हेमीप्लीजिया मतलब आधी बॉडी पैरालाइज हो गई. ओके, सो लीजन्स ऑफ द इंटरनल कैप्सूल से ऑन द राइट हैंड साइड will cause paralysis of half body on the left side because fibers are crossing at the level of the medullary pyramid. तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट का अगर लीजन है तो अपोजिट साइड में अफेक्ट करेगा बॉडी को, सेम साइड में नहीं करेगा. ओके, देन देयर आर सर्टेन फीचर्स अबाउट विच वी आस्क इन द थ्योरी आल्सो एज शॉर्ट नोट. स्पाइनल कॉर्ड को पूरा काट दें, कंप्लीट ट्रांसैक्शन कहलाता है. क्या फीचर्स आएंगे पेशेंट के अंदर? आधी स्पाइनल कॉर्ड को काट दें तो हेमी सेक्शन कहलाता है वो, और क्या फीचर्स आएंगे उसके अंदर, उसको हम कहते हैं ब्राउन सिकार्ड सिंड्रोम. ओके, सो कंप्लीट ट्रांसैक्शन अगर कर दिया जाए स्पाइनल कॉर्ड का तो ऑल डिसेंडिंग एंड असेंडिंग पाथवेज आर डैमेज. जो फाइबर ऊपर जा रहे थे वो भी कट गए, जो फाइबर नीचे आ रहे थे वो भी कट गए. तो व्हेन द कंप्लीट ट्रांसैक्शन टेक्स प्लेस, ज्यादातर एक्सीडेंट्स में ही होता है ये. पेशेंट गोज अंडर द कंडीशन विच यू कॉल द स्पाइनल शॉक में चला गया मरीज. ओके, immediate effect है ये. Spinal shock means usually patient becomes unconscious also. Patient loses consciousness also. Loss of, if you examine such a patient brought to the emergency, what will you find? Loss of muscle tone, flaccid paralysis. हाथ पैरों में बिल्कुल ही resistance नहीं होगा आप मूव करेंगे तो. There is paralysis of the muscles and that is flaccid paralysis immediately. Muscle tone बिल्कुल खत्म हो गया. लॉस ऑफ डीप रिफ्लेक्सेस, इफ यू एग्जामिन दीज रिफ्लेक्सेस, जिनको हम बात करेंगे आगे, ये डीप रिफ्लेक्सेस अगर आप एग्जामिन करेंगे, नो रिफ्लेक्स विल बी देयर, एब्सेंट डीप रिफ्लेक्सेस विल बी देयर, एब्सेंट सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस विल बी देयर. इट मींस टोटल एरिफ्लेक्सिया विल बी देयर. डीप रिफ्लेक्सेस एब्सेंट, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स एब्सेंट, ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस एब्सेंट. So complete areflexia is there, autonomic functions are also lost completely. And the most important manifestation of the loss of autonomic reflexes, what should it be? What it should be? क्या होना चाहिए? अब मरीज में देखेंगे तो क्या चीज हमें ऐसा पता लगेगी इसकी ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस खत्म हो गई बिल्कुल. Single parameter to assess that, record of the blood pressure. The loss of the sympathetic tone will cause complete relaxation of the vascular smooth muscles, dilatation होगा, and there will be severe fall in the blood pressure will be there. As I said, fall in the blood pressure is there. Loss of all sensations below the level of the section, सारा खत्म हो गया. Joints offer no resistance to the passive movement, reflex खत्म हो गई. No control over the bladder and bowel function because autonomic functions have been lost completely. These are the features which are immediately evident when the patient is brought and if the complete spinal cord has been damaged. But recovery takes place gradually. 6 to 12 weeks लगते हैं, 3-4 महीने में थोड़ा थोड़ा रिकवरी आना शुरू होता है. एंड टोन स्टार्ट्स रिटर्निंग. मसल्स में टोन जो खत्म हो गया था बिल्कुल, वो धीरे धीरे आना शुरू होता है. ठीक है, बढ़ना शुरू होता है. ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड अल्टीमेटली बिकम्स मोर देन नॉर्मल. इट बिकम्स
more than normal, so it is becomes hypertonia. रिकवरी के दौरान बाद में टोनलेस मसल्स हो गई थी, उनमें टोन बढ़ गया है, हाइपरटोनिया हो गया. रिफ्लेक्सेस स्टार्ट रिटर्निंग ऑल्सो, धीरे धीरे रिफ्लेक्सेस भी वापस आनी शुरू होती हैं, और ये रिफ्लेक्स जो बिल्कुल खत्म हो गई थी धीरे धीरे आती है, बढ़ती है, और फिर ये एबनॉर्मली ज्यादा हो जाती है. एक्सैजरेटेड रिफ्लेक्सेस आर देयर, ग्रेजुअली बिकम्स एक्सैजरेटेड. ये ग्रेजुअल रिकवरी प्रोसेस चल रही है. रेजिस्टेंस टू पैसिव मूवमेंट इंक्रीजेस, पहले कुछ भी नहीं आ रहा था, मगर अब आप आर्म को मूव करेंगे तो आपको लगातार ज्यादा दबाव बनाना पड़ेगा, तब जाकर के ये हाथ पांव मोड़ पाएंगे. रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, urinary retention is there. When the recovery of the autonomic function takes place, sympathetic recovery occurs earlier than the parasympathetic. और ब्लैडर में अगर सिंपैथेटिक रिकवरी पहले होती है तो क्या होगा? ब्लैडर में अगर सिंपैथेटिक टोन बढ़ता है तो क्या इफेक्ट आना चाहिए? आपको न्यूरोजेनिक ब्लैडर्स पढ़ाए होंगे ना किडनी में, न्यूरोजेनिक ब्लैडर्स. शॉर्ट नोट पूछते हैं हम इसके बारे में, नाम सुना है न्यूरोजेनिक ब्लैडर? पढ़ाया तो होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता. एनीबडी? न्यूरोजेनिक ब्लैडर्स? नहीं. अनइनिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर, सेंसरी न्यूरोजेनिक ब्लैडर, ऑटोनॉमस ब्लैडर, ऑटोमेटिक ब्लैडर, मोटर न्यूरोजेनिक ब्लैडर, 5 तरह के बताते हैं हम लोग. एफरेंट नर्व काट देंगे तो क्या होगा? पुडेंटल नर्व काट देंगे तो क्या होगा? रिफ्लेक्स ऑब्लिटेट कर देंगे तो क्या होगा? पढ़ाते हैं ये, डेफिनेटली पढ़ाया होगा. So when the autonomic function recovers after the complete spinal cord transaction, sympathetic tone returns earlier than the parasympathetic. That causes increased tone of the bladder neck. Bladder neck जो मसल्स हैं आपकी इंटरनल स्फिंक्टर की, वो सिंपैथेटिक से सप्लाई होती है बेसिकली. जब सिंपैथेटिक का टोन बढ़ता है तो ब्लैडर नेक पे टोन बढ़ता है, और वो यूरिनेशन नहीं होने देता है. यूरिन बाहर नहीं निकलेगा, रिटेंशन हो जाएगा, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक का इफेक्ट अभी आना शुरू ही नहीं हुआ है. So that causes retention of the urine is there. Urinary retention is a main feature. आपको पेशेंट का ध्यान रखना पड़ता है. ब्लैडर फुल हो गया तो आपको कैथेटर डालना पड़ेगा इमीडिएटली, वरना ब्लैडर फट सकता है, फंक्शनलेस हो सकता है. वॉलंटरी मूवमेंट नेवर अकर्स, कभी भी रिकवरी नहीं होती वॉलंटरी मूवमेंट्स की. नो सेंसरी रिकवरी इज देयर. पैरालिसिस इज स्पास्टिक टाइप, मसल्स आर हाइपरटोनिक, स्टिल यू कैन नॉट यूज देम. There is complete loss of voluntary motor activity. Altered bowel functions are there. Constipation, diarrhea, constipation changes are there. Plantar reflex becomes always pathological. अब ये मैंने अभी तक ये नहीं बताया, इसलिए कि ये प्रैक्टिकल में करके बताते हैं हम सारी, तो हम देखेंगे इनको थोड़ा बाद में. हाइपरएक्टिव रिफ्लेक्स अफेक्ट बोथ स्ट्रेच एंड, तो दोनों जो रिफ्लेक्स है जहाँ आपकी फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स है और स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, वो टाइप ऑफ रिफ्लेक्स बिकम hyperactive after or during recovery from the complete spinal shock. Hyperactive stretch reflex manifest as clonus. क्या मतलब समझे इसका? Any idea? Any idea? देखिए, सबको तो नहीं दिखेगा, सब देखना भी नहीं चाहते. If I tape it like this, okay? या मैं इसको यूं करूं, this is the normal knee jerk. I am taping the patellar tendon, trying to stretch the quadriceps muscle. Muscle responds by contraction. There is an extension at the knee joint. Knee joint पे extension हो रहा है, normal phenomena है, ठीक है. ये यूं मारेंगे, यूं आएगा, ये रिएक्शन आएगा. ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, ठीक है. इसको हम डीप रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं,
टेंडन जर्क भी कह सकते हैं, अलग अलग नाम है। दिस रिफ्लेक्स आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड लीजन डिसअपियर, खत्म हो जाती है, धीरे धीरे इसकी रिकवरी होती है, नॉर्मल पे आती है और फिर ये हाइपर एक्टिव हो जाती है। इफ आई टेप इट, वायलेंट रिएक्शन विल बी देयर, हाइपर एक्टिव डीप रिफ्लेक्स इज देयर, एंड दिस हाइपर एक्टिव डीप रिफ्लेक्स कैन बी मैनिफेस्टेड एज अ फिनोमेना दैट इज नोन एज क्लोनस। क्लोनस का मतलब आपने जैसे इसको पकड़ा, पटेला को पकड़ा, नीचे धक्का दिया, पेशेंट के लेटा हुआ है, तो ये मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है, क्लोनस की तरह एक तरह लगातार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन टेकिंग प्लेस। दिस फिनोमेना नोन एज क्लोनस। ये क्लोनस आपको नी जॉइंट पे भी दिख सकता है और ये क्लोनस आपको एंकल जॉइंट पे भी दिख सकता है। द फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स बिकम्स ऑल्सो हाइपर एक्टिव, और जरा सा भी आपने थोड़ा सा पेनफुल स्टिमुलस कहीं ऐसे पेशेंट के जो अस्पताल में भर्ती है, स्पाइनल शॉक हुआ था इसको, देन इट लीड टू वाइड स्प्रेड रिएक्शंस। तो उसका हो सकता है बिस्तर में पेशाब निकल जाए, टट्टी निकल जाए, बिकॉज देयर इज नो कंट्रोल ओवर देयर एंड रिफ्लेक्स इज हाइपर एक्टिव। So there is manifestation of reaction such as loss of urination, defecation, sweating may be there, contraction of the flexor muscles are there. So these reflexes becomes hyperactive. Reactions are hyperactive in the recovery of the spinal shock. And posture is maintained flexor of the lower limbs. तो अगर पेशेंट लेटा हुआ है, करवट में ले रखा है, तो ये थोड़े से पैर फ्लेक्स होंगे इस तरह से, ये इस तरह से मूवमेंट आएगा, थोड़ा सा आदमी झुका हुआ होगा, पैर भी थोड़े से मुड़े हुए होंगे, फ्लेक्शन एटीट्यूड विल बी देयर। अब हम इनके बारे में बात करेंगे। सो रिफ्लेक्सेस, क्योंकि अभी हमने बात कर ली उनकी, हमको इनके बारे में बिल्कुल पता नहीं है, मेरे ख्याल से इसके बारे में आगे ही बात करें तो ठीक रहेगा।